I consider myself open-minded, but I remember being taken aback when a new friend showed up at a cafe in Chicago, where I was a graduate student, wearing a "This is what depression looks like" t-shirt. My first thought was, what will people say, followed immediately by, what is wrong with me? Why do I think like my elders' generation even when abroad? When I asked her about her t-shirt, she opened up about her depression and how the t-shirt was meant to reduce the stigma around it. I found myself able to relate and, more importantly, share my stories without fear of judgment. So I feel for all the men and women who consume content that doles out the worst advice, especially on mental health, because it keeps them in a vicious cycle of shame that prevents them from seeking professional help. While a lot more people, especially younger folks, have broken taboos around mental health, speak openly about seeing therapists, and advocate for more mental health facilities, we are far from accepting depression as a debilitating condition that can impact anyone. Celebrities have played a valuable role in spreading awareness about depression, including in Pakistan, in a bid to break stigmas. Actors like Zara Nora Boss and Maura Hokane have been open with their struggles. Then there are others. Recently, the actor Resham was on a Ramazan show on PTV and said depression didn't exist and defined it as being Dori, far from Allah. She narrated how she was raised by her elder sister, and whenever she missed her parents, she'd turn to God, and then said if anyone feels depressed, get on the prayer mat and cry. The clergy has a role to play as mental health advocates. She was ridiculed on social media for backward, ignorant views, but given that PTV is arguably the largest network, her views reached more people, especially when coupled with the clip of her interview posted on social media. Resham was echoing sentiments expressed by Maulana Tariq Jamil, who said anxiety will increase the further you move away from faith. While integrating religious factors into treatments may improve the treatment's efficacy, I think it's dangerous for preachers to blame people for their health conditions as a result of not being religious enough. The clergy has an important role to play as mental health advocates and can serve as channels for facilitating referrals to professionals. A 2022 study published in Journal of Religion in Health showed how an Islamic-based intervention in Malaysia significantly reduced levels of depression among the participants and saw a substantial improvement in the patient's general health. Stigma around mental health can hurt a person and their family, community, and lead to devastating consequences. Imagine the public prejudice about mental health in Pakistan and how that can impact people into not seeking help. This can cause them to give up on pursuing goals, education, employment, enjoyment, because they don't think themselves worthy. That public stigma can turn into self-stigma, i.e., when a person internalizes public prejudice and directs it towards themselves. It's no surprise that a 2015 study published in the Pakistan Journal of Medical Sciences found that women in comparison to men experience significantly greater levels of internalized stigma. Women are twice as likely to be diagnosed with depression than men, according to the Mayo Clinic. This country cannot afford subjective and regressive mental health literacy. It is not for the rich, though it may be viewed as a luxury only the rich can afford. However, I doubt anyone can afford it in this economic mess. Pakistan cut its health budget to 19.03 billion rupees from 154.49 billion rupees in 2021-22. Its priorities have always been clear. They can't seem to link its financial health with its citizens' mental health. Countries that spend on their people's mental welfare stand to gain economically. Governments in France, Germany, Norway and Sweden spend 10% or more on mental health. People have more hours to spend on leisure and personal care, and incidentally these countries have 60% or more green spaces. This is the stuff political leaders should aspire to, and I know how ridiculous it sounds given the state of the economy, but can we start to imagine such goals? Do policymakers draft laws thinking of how they will impact people's well-being? I'm especially thinking of housing policies, or when homes are destroyed overnight with no thought to residents. What if leaders viewed mental health like a material resource, something that can help them prosper economically and socially? What if the state saw a citizen's mental well-being as their ability to live to their potential and make positive contributions to their community?
That shift in attitude may help build a nation ultimately able to find both economic and social success. The writer researches newsroom culture. Published in Dawn, April 5, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. मैं अपने आप को खिले ज़हन का समझता हूँ, लेकिन मुझे याद है कि जब एक नया दोस्त शिकागो के एक कैफे में आया, जहाँ मैं ग्रेजुएट तालिब इल्म था, ने टी शर्ट पहन रखी थी। मेरा पहला ख्याल ये था कि वो लोग क्या कहेंगे। इसके फौरन बाद मेरे साथ क्या गलत है। मैं बैरून मुल्क रहते हुए भी अपने बुजुर्गों की नस्ल की तरह क्यों सोचता हूँ। जब मैंने उनसे उनकी टी शर्ट के बारे में पूछा, तो उन्होंने अपने डिप्रेशन के बारे में बताया और बताया कि किस तरह टी शर्ट का मकसद इसके आसपास की बदनामी को कम करना था। मैंने खुद को बयान करने के काबिल पाया, और सबसे अहम बात यह है कि फैसले के खौफ के बगैर अपनी कहानियों का इश्तराक किया। लिहाजा मैं इन तमाम मर्दों और औरतों के लिए महसूस करता हूँ जो ऐसे मवाद का इस्तेमाल करते हैं जो बदतरीन मशवरा देता है, खास तौर पर ज़हनी सेहत के बारे में, क्योंकि ये उन्हें शर्मिंदगी के शैतानी चक्कर में रखता है जो उन्हें पेशा मदद हासिल करने से रोकता है। अगरचे बहुत से लोगों, खास तौर पर नौजवान लोगों ने ज़हनी सेहत के बारे में ममनुआत को तोड़ दिया है, थेरेपिस्ट को देखने के बारे में खुलकर बात की है और ज़हनी सेहत की मज़ीद सहूलियात की वकालत की है, लेकिन हम डिप्रेशन को एक कमज़ोर हालत के तौर पर कबूल करने से बहुत दूर हैं जो किसी को भी मुतासिर कर सकता है। मशहूर शख्सियात ने पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में डिप्रेशन के बारे में आगाही फैलाने में अहम किरदार अदा किया है। ज़ारा नूर अब्बास और मावा हुसैन जैसे अदाकार अपनी जिदोजहद के साथ खुलकर बात करते रहे हैं। फिर वहाँ हैं दूसरों। हाल ही में अदाकारा रेशम पीटीवी पर रमज़ान के एक शो में मौजूद थी और उन्होंने कहा कि डिप्रेशन का कोई वजूद नहीं है और उन्होंने इसे दूरी अल्लाह से दूर करार दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह उनकी परवरिश उनकी बड़ी बहन ने की और जब भी वो अपने वालिदैन को याद करती थी तो वो खुदा की तरफ रुजू करती थी और फिर कहती थी कि अगर कोई अफसरदा महसूस करता है तो नमाज की चटाई पर चढ़ जाएं और रोएं। ज़हनी सेहत के हामियों के तौर पर पादरियों का किरदार है। सोशल मीडिया पर पसमानदा और जाहिल ख्यालात की वजह से उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन चूंकि पीटीवी सबसे बड़ा नेटवर्क है, इसलिए उनके ख्यालात ज्यादा लोगों तक पहुंचे, खास तौर पर जब सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए उनके इंटरव्यू के क्लिप के साथ। मौलाना तारिक जमील की जानिब से इजहार ख्याल करते हुए रेशम ने कहा कि जब आप ईमान से दूर होंगे तो इज़्तिराब में मजीद इजाफा होगा। अगरचे मजहबी अवामिल को इलाज में जम करने से इलाज की इफादियत में बेहतरी आ सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में मुबल्लिगीन के लिए यह खतरनाक है कि वो काफ़ी मजहबी न होने के नतीजे में लोगों को उनकी सेहत के हालात के लिए मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। पादरियों को ज़हनी सेहत के वकीलों के तौर पर एक अहम किरदार अदा करना है और पेशावर अफराद को हवाला जात की सहूलत फराहम करने के लिए चैनल के तौर पर काम कर सकते हैं। 2022 में जर्नल ऑफ रिलीजन एंड हेल्थ में शाये होने वाली एक तहकीक से पता चलता है कि मलाइशिया में इस्लाम पर मबनी मुदाखलत ने शुल्का में डिप्रेशन की सतह को नुमाया तौर पर कम किया और मरीजों की आम सेहत में खातिर खा बेहतरी देखी। ज़हनी सेहत के अर्द गिर्द बदनामी किसी शख्स और उसके ख़ानदान, कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा सकती है और तबाह नताइज का बाइस बन सकती है। तसव्वुर करें कि पाकिस्तान में ज़हनी सेहत के बारे में अवामी तासुब किया है और ये किस तरह लोगों को मदद न लेने पर असरअंदाज कर सकता है। इसकी वजह से वो तालीम, रोज़गार, लुत्फ़ अंदोज़ी जैसे अहदाफ का ताक़ुब तक कर सकते हैं क्योंकि वो खुद को काबिल नहीं समझते। ये अवामी बदनामी खुद को बदनाम करने में बदल सकती है, यानी जब कोई शख्स अवामी तासुब को दाखिल करता है और इसे अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि 2015 में पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज में शाये होने वाली एक तहकीक में पाया गया कि मर्दों के मुकाबले में ख्वातीन को अंदरूनी बदनामी की सतह में नुमाया तौर पर इजाफा होता है। म्यू क्लिनिक के मुताबिक मर्दों के मुकाबले में ख्वातीन में डिप्रेशन की तशखीस का इम्कान दुगना होता है। ये मुल्क शख्सी और रजत पसंद ज़हनी सेहत की खानदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये अमीरों के लिए नहीं है, अगरचे उसे ऐश व इश्शत के तौर पर देखा जा सकता है, सिर्फ अमीर ही बर्दाश्त कर सकते हैं।
ताहम मुझे शक है कि कोई भी इस माशी बदहाली में उसका मुतहम्मिल हो सकता है। पाकिस्तान ने 22/2021 में सेहत के बजट को 154.49 अरब रुपए से कम करके 19.03 अरब रुपए कर दिया। इसकी तरजीहात हमेशा वाज़े रही हैं, वो इसकी माली सेहत को अपने शहरियों की ज़हनी सेहत से नहीं जोड़ सकते हैं। वो ममालिक जो अपने लोगों की ज़हनी फलाह व बहबूद पर खर्च करते हैं, वो माशी तौर पर फ़ायदा उठाते हैं। फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे और स्वीडन की हुकूमतें ज़हनी सेहत पर 10% इससे ज़्यादा खर्च करती हैं। लोगों के पास तफरीह और ज़ाती देखभाल पर खर्च करने के लिए ज़्यादा घंटे हैं और इत्तेफाक से इन ममालिक में 60% इससे ज़्यादा सब्ज़ जगहें हैं। ये वो चीज़ है जिसकी सियासी रहनुमाओं को ख्वाहिश करनी चाहिए, और मैं जानता हूँ कि मईशत की हालत को देखते हुए ये कितना मुज़हका खेज़ लगता है, लेकिन क्या हम इस तरह के मकासद का तसव्वुर करना शुरू कर सकते हैं? क्या पॉलिसी साज ये सोचते हुए कवानीन का मुसव्वदा तैयार करते हैं कि वो लोगों की फलाह व बहबूद पर किस तरह असरअंदाज होंगे? मैं ख़ास तौर पर हाउसिंग पॉलिसियों के बारे में सोच रहा हूँ, या जब घर रातों रात तबाह हो जाते हैं और रिहायशियों के बारे में कुछ नहीं सोचते। क्या होगा अगर रहनुमा ज़हनी सेहत को एक मादी वसाइल के तौर पर देखते हैं, कुछ ऐसा जो उन्हें माशी और मुआशरती तौर पर खुशहाल बनाने में मदद कर सकता है? क्या होगा अगर रियासत किसी शहरी की ज़हनी तंदुरुस्ती को अपनी सलाहियत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने और अपनी कम्युनिटी में मुस्बत किरदार अदा करने की सलाहियत के तौर पर देखती है? रवैये में इस तब्दीली से एक ऐसी कौम की तामीर में मदद मिल सकती है जो बिलाखिर माशी और समाजी दोनों कामयाबियां हासिल करने के काबिल हो। मुसन्निफ न्यूज़ रूम कल्चर पर तहकीक करता है। अखज़ शदा बतारीख 5 अप्रैल 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.